So the first chapter has been completed. So let's start, my dear, with the next chapter, that is the equilibria. Okay, my dear. What is the equilibria? Equilibria का कुछ part, some of the parts you have done in your A1 chemistry. ठीक है जी, K, P, ठीक है जी, और Ka, ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हुए हो. ठीक है, Kc भी आप लोग कर चुके, Ka भी सॉरी, Kc, I'm sorry, Ka आप अभी कर रहे हैं. Kc and Kp, so those two things you have done in your A1. यहाँ पे भी उनका जिक्र थोड़ा सा आएगा तो मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा. डोंट यू वरी अबाउट इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस equilibria, that is the ionic product of water. Ionic product of water. So ionic product of water, that is denoted by the symbol Kw. So Kw, that is the symbol of it. Okay, so the ionic product of water. First of all, my dear students, if you take the pure water like distilled water, that is 99.9% pure. It is the pure water. Okay, so pure water, that is a very weak electrolyte. Weak electrolyte means that if you take the 100 molecules of the water, okay, out of 100 molecules, 0.001% chance of a molecule to be ionized. 0.001% chance. Pure water. Okay, but if you take the tap water, in that tap water you got the minerals in it. And if you put little bit amount of the acid, then again the ions they are being produced. But I am talking about the pure water. So pure water, that is a very weak electrolyte. Okay, so this is the first point you should write up here. The pure water is very weak electrolyte. Okay. So electrolyte is any substance that ionizes, you know that, okay? So pure water, that is a very weak electrolyte. So weak electrolyte means if you take the water, let's suppose this is the water, H2O, okay? So weak word means that you should put the reversible sign, okay? And ionize H positive and OH minus. So this reversible sign shows that it partially ionizes. Okay, partially ionizes means a very small amount of water that is being ionized. If I'm going to say water is a very strong electrolyte, so in the strong electrolyte you should put only one L. All the water that should change into the ions. But here, pure water is a very weak electrolyte, which means it partially ionizes, so you should put the reversible sign up here. Okay. Now the next thing, आप लोगों को पता है कि whenever there is a reaction which is the reversible reactions क्या होती हैं? आप लोगों ने O level A1 दोनों में पढ़ा है. Reversible reactions are the reactions which proceeds forward, okay, and they proceed backward as well. Okay, and keep remember, in every reversible reaction there is a stage when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Okay, it means let's suppose if the 10 molecules they are being broken down to form ions, the 10 molecules they are being made from these ions. So the rate of forward and backward reaction they becomes equal. So the amount of water broken, that would be equal to the amount of water formed. Okay. So that stage in a reversible reaction, that is called as the equilibrium. Okay, and you know that when any reaction reaches the equilibrium, we find out its equilibrium constant, which is denoted by the symbol Kc. और Kc का फॉर्मूला आप लोगों को मैं देसी सा फॉर्मूला बता रहा. The formula of the Kc क्या होता है? Products की concentration, okay, divided by reactants की concentration. ये एक देसी सा फॉर्मूला है. प्रोडक्ट्स मीन जो इस साइड में है, रिएक्टेंट मीन इस साइड पे. लेकिन असल में आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वर्ड है वो टेक्निकली रॉन्ग होता है.
these are the reactants on right hand side and these are the reactants on left hand side. लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको जरा फॉर्मूला बनाना आसान हो जाए. So now what we are going to do, we are going to put the values of here Kc, that is equal to products. This sign shows the concentration. This one shows if you got the square brackets around any value, so around anything, it means it is the concentration sign. Okay, so this sign shows the concentration. So concentration of H positive ions, okay, H positive ions, and concentration of OH negative ions divided by the water concentration, like that. Did you get it? Yes. So we got H positive concentration, we got OH negative concentration. This is the product concentration divided by the reactant concentration, which is the water. Okay, guys. Now, the next thing I'm going to discuss up here. यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखूंगा और उनको रब करूंगा. तो आप लोग प्लीज उनको साइड पे कहीं पे दिखना हो तो लिख लीजिएगा. ये मुझे कुछ समझाना है आपको, तो मैं लिख के और रब भी करूंगा बाद में. तो प्लीज लिसन. So this water that is present in the reciprocal on that side, it comes on the left hand side. It would be multiplied. So Kc into water concentration, that is equal to H positive concentration and OH negative concentration. Okay. Now everybody don't write the things. अभी नहीं लिखना, जब मैं कहूंगा उसके बाद लिखिएगा. Okay. Now everybody just listen. If Kc and water, they are being multiplied, and on the right hand side there is nothing present in the reciprocal. There is nothing present in the reciprocal. So Kc and water, they would be multiplied and they would form Kw. Did you get it? If nothing is written in the reciprocal of this equation. Okay, I'm going to rub this one. Okay, now what I'm going to do, just listen everyone. So the same values, they are being multiplied, same Kc and water. But if in the reciprocal there is a thing written like any acid concentration is written, acid is written, the concentration of acid, like ethanoic acid, propanoic acid, any acid concentration is written in the reciprocal. So the same thing, Kc and water, the same thing are multiplied, but this time they would multiply to form Ka. And this Ka, that is called as the acid dissociation constant. And we have to discuss this thing later on. We are not discussing it up here. I'm just telling you, the same things are multiplied. The difference only lies if nothing is written in the reciprocal, Kc and water would multiply to form Kw. But if acid is written in the reciprocal, Kc and water would multiply to form Ka, A for acid dissociation constant. If at the place of acid you got the base. So again the same things, they are being multiplied to form Kb. And this is called as the base dissociation constant. Did you get it? So we got the three different ways by which Kc and water, they would be multiplied to form Kw, Ka and Kb. Here we have nothing in the reciprocal. Nothing is written in the reciprocal. Okay? Nothing is written. So now what would happen if nothing is written in the reciprocal? So what would happen? The Kc and water, they would multiply to form Kw, that is equal to H positive concentration and OH negative concentration, and Kw, that is called as the ionic, if you look, product of water. Okay, this is the ionic product of water, Kw. Okay,
So now if you people want to define the KW, what is its definition? You can define it from there. Anyone would tell me what would be the definition of it? Come on. What's the try करें इसको देखिए. Yes. Anyone? Yeah. Just try it बेटा. Equation को देख के try करो. It is the product. Product का मतलब multiply होगा. किस चीज का? Of the concentration of hydrogen ions and the concentration of hydroxide ion. So the product of hydrogen ion concentration and hydroxide ion concentration, that is called as the Kw, or I mean product of both. Okay. So the definition of Kw I am going to write up here. Definition of Kw. Okay. The product means multiply. This product does not mean that the thing present on the right hand side. Okay. The product of concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions is called Kw. Okay. Okay, my dear students. Now we are going to start with this detail. So it means Kw. This is the formula. Kw, that is equal to H positive ion concentration and OH negative ion concentration. लेकिन आपने ना Kw सिर्फ तभी होगा जब वो प्रोडक्ट जीरो. प्रोडक्ट जीरो क्या मतलब? कुछ आपने भाई मैंने कहा था रेसिप्रोकल नीचे कुछ भी ना लिखा हो तब Kw लिखते हैं. अगर नीचे ऐसे लिखा हो तो K8, नीचे बेस लिखी हो तो उसको K भी करते हैं. तो क्या हो गया वर्ड? Okay, my dear students, now what we have did at 25 degree Celsius. अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा. 25 degree Celsius, which is the room temperature, 298 Kelvin. 25 degree Celsius पे what we did, we find out the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion. कंसंट्रेशन आप लोग चीज इतनी ले लें या इतनी ज्यादा ले लें, कंसंट्रेशन सेम रहती है. कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. जैसे आपके पास 1 लीटर चीज है, आपके पास 1 मिलीलीटर चीज है, तो कंसंट्रेशन दैट वुड रिमेन सेम. ओके. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने जो प्योर वाटर है उसकी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट की कि वो कितनी निकलती है. निकल के दोनों को मल्टीप्लाई किया. जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी ऑलवेज गेट दिस आंसर 1 into 10 raised power minus 14. तो ये 1 into 10 raised power minus 14 असल में Kw की वैल्यू है. यानी Kw की जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज ऑलवेज हैविंग दिस वैल्यू. अब क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने यही टेम्परेचर क्यों लिया, व्हाई आई हैव टेकन दिस टेम्परेचर. ठीक है जी, इससे ज्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं लिया? उसकी वजह ये है भाई कि जो वाटर की आयोनाइजेशन है, ठीक है जी, ये वाटर आयोनाइज हो रहा है, तो इसकी आयोनाइजेशन जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, पॉजिटिव 8 किलो जूल पर मोल. तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन डेल्टा H पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक है, और बैकवर्ड क्या होगा? एक्सोथर्मिक. ठीक है जी. तो भाई अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम एंडो की साइड में शिफ्ट होता है, एंडो इस तरफ है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी. और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी दोनों की, and if you multiply them you will get a greater answer than this. और अगर आप लोग टेम्परेचर लो कर दोगे 25 से, let's suppose you are going to take it at -10 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे जाएगा जिधर एक्सो लिखा हुआ है, पीछे की तरफ जाएगा. And when it moves backward, the concentration of H positive and OH negative that would decrease.
और जब इनकी दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई एक छोटा आंसर आएगा, you will get a smaller answer. So that is why the value of the Kw is always 1 into 10 raised power minus 14 at 25 degrees Celsius. Not less than that, not more than that. The value of Kw is dependent on the temperature. And what is the reason behind it? I told you that ionization of water, that is an endothermic process. By increasing the temperature, the ion concentration that would increase. Okay, why? Because the equilibrium shifts to the right hand side favor the forward reaction, and the concentration of these two things that will increase, resulting in the value to become bigger. Okay, but if you decrease the temperature, the equilibrium shifts to the backward side. The concentration of H positive and OH minus that would decrease. Okay, so when it will decrease, when you multiply them, you will get a smaller answer. Okay, so just write down this thing. The value of Kw is dependent on temperature as ionization of water is an endothermic process. So by increasing the temperature, the equilibrium shifts to the right hand side favor the forward reaction and concentration of H positive and OH negative increases, resulting in the value of Kw to be increased. और इसके आगे में वर्ड लिखा हूं वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब कि इसका ऑपोजिट. If you decrease the temperature, the equilibrium shifts to the backward side. The concentration of H positive and OH negative would decrease. Why? Because the backward reaction is isothermic. Okay. So the concentration of H positive and OH negative that would decrease, resulting in the value of the Kw that would be decreased as well. Okay. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज 1 into 10 raised power minus 14. Okay guys, now we are going to discuss one of the things. I think I need a calculator. Not me, all of you should have the calculator in your hand, because we are going to discuss something up here. Okay, and then I'm going to write down a formula up there. So you people have to memorize this formula. This is the first formula. Kw that is equal to H positive and OH negative ion concentration, and the value of Kw is this one. You can erase this one and put this value up here. Okay, if you need it at some place. This is the first formula you should know. Sir, हमेशा ही यही value होगी, change होगी नहीं. Okay, this is the constant value. Okay, so open up your calculator. So I want every one of you, आप लोग अपने कैलकुलेटर के ऊपर ये साइन दबाइए नेगेटिव, नेगेटिव, then press the sign log, okay, and then 0.001. Okay,
लॉग की बेस ऑटोमेटिकली 10 होती है, तो अगर आपके कैलकुलेटर पे 10 लिखा हुआ आ जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज। लॉग की बेस ऑटोमेटिकली 10 होती है, तो माइनस लॉग 0.001, एक इसका आंसर मुझे निकाल के दें, और एक नेगेटिव लॉग ऑफ 1000, इसका आंसर निकाल के दें। इसका 3 आ गया, तो इसका -3 आ गया। ठीक है जी। अब जनाब यहाँ पे गौर करो, इन वैल्यूज को आप लोग अगर चेक करें, दिस इज 0.01। ओके, सो नेगेटिव लॉग इज अ टर्म इन द मैथ। जिन लोगों ने फर्दर मैथ या वैसे मैथ रखा होगा उनको पता होगा कि नेगेटिव लॉग इज अ टर्म इन द मैथ जो छोटी वैल्यूज को बड़ा कर देती है और बड़ी वैल्यूज को स्मॉलर कर देती है। सो इफ यू लुक 0.001, so this value is the 1000th part of 1, यानी एक के अगर 1000 पार्ट कर दिए जाएं तो दिस इज 0.01। तो उसका अगर आप नेगेटिव लॉग लोगे तो नेगेटिव लॉग में इस छोटी वैल्यू को विच इज वेरी स्मॉल देन 1 इसको 3 में चेंज कर दिया है। एंड इफ यू टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ 1000, so 1000 इज अ बिगर वैल्यू। ओके, तो एक बिगर वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेंगे तो नेगेटिव लॉग चेंजेस दिस बिगर वैल्यू इनटू द स्मॉलर वन लाइक -3। तो नेगेटिव लॉग को शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं कि इट चेंजेस द स्मॉलर वैल्यूज इनटू द बिगर वंस एंड चेंजेस द बिगर वैल्यूज इनटू द स्मॉलर वन। उसकी रीजन क्यों, ये क्यों हम लोग करते हैं, इसके रीजन ये है बेटा कि किसी भी सॉल्यूशन में the concentration of H positive ion is very smaller। अब एक चीज और ध्यान में रखें ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। ये देखें जी, एक चीज होती है 0 से 40। आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा होगा, ये पीएच का स्केल होता है, याद है? ठीक है जी, पीएच का स्केल 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट, ये 7 है। 7 से क्यों न्यूट्रल वो चीज होती है, ये न्यूट्रल है। ठीक है जी, न्यूट्रल के ऊपर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इफ यू मूव लेस देन 7, so what would happen, it would become acidic, और एसिडिक पीएच में H पॉजिटिव ग्रेटर हो जाती है और OH नेगेटिव से। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि भाई जो एसिड होता है उसमें भी OH नेगेटिव मौजूद होते हैं, तो OH नेगेटिव को मत समझो कि OH नेगेटिव सिर्फ एल्कली में होते हैं, एल्कली में ये ज्यादा होते हैं। एसिड में OH नेगेटिव बोथ आर प्रेजेंट, सो दे आर प्रेजेंट इन द एसिड। इसी तरीके से इफ यू मूव अबव 7, सो द थिंग दैट विल बिकम बेसिक और एल्कलाइन। तो इसमें क्या होगा, OH नेगेटिव ग्रेटर हो जाएंगे H पॉजिटिव से। तो कीप रिमेंबर, हम लोग क्या करते हैं, ये H पॉजिटिव को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। अक्सर बुक्स में या कुछ नोट में या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये चीज लिखी होती है जो कि 100% रॉन्ग है। आपका जो ए लेवल है उसमें ये चीज गलत होगी। मैं आपको बताता हूँ क्या। आपने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को एसिड में, बेस में और न्यूट्रल चीज में यूज करना है। आप लोग देखें, आप लोग बेस की क्या निकालते हैं, पीएच। ये देखें क्या निकालते हैं, पी और एच। ये पी वर्ड कहीं पे भी लिखा हो, पी का मतलब होता है कि नेगेटिव लॉग, इसका मतलब नेगेटिव लॉग, और ये एच लिखा हुआ है, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच। अक्सर बुक्स में और कोई और जगहों पे उन्होंने ये पीओएच का फॉर्मूला भी बताया होता है। पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। दिस थिंग इज नॉट टेक्निकली करेक्ट एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर ए लेवल। तो इसलिए खुदा से लिए इसको मत याद कीजिएगा। यू ओनली हैव टू लर्न दीज टू फॉर्मूला। जहां पे भी पी लिखा हो, ठीक है, मसलन ये देखें, ये लिखा हुआ है पी के ए, की मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कोई मुझे बताएगा कि पी का मतलब क्या है, माइनस लॉग, और आगे क्या लिखा हुआ है के ए, तो के ए लिखो। तो पी जहां पे लिखा हो, पी का मतलब ही होता है नेगेटिव लॉग, और नेगेटिव लॉग इज अ टर्म व्हिच मेक्स द स्मॉलर वैल्यूज द बिगर वन एंड बिगर वैल्यूज द स्मॉलर वन। अब आप लोग जरा गौर करें, स्ट्रॉन्ग एसिड, सुने, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी पीएच क्या होती है, नॉर्मली आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ी होगी, 1 2, यही होती है ना, कम होती है। तो भाई कम पीएच, कम वैल्यू का मतलब क्या है कि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा।
इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज की पीएच 5 है, ये 5 वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू का मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी भाई, इसीलिए वो वीक एसिड है। ठीक है जी। तो पीएच का मतलब ये होता है, पी का मतलब नेगेटिव लॉग, और एच कोई भी चीज ऊपर लिखी हो, आप लोग इसको मत कॉपी कीजिएगा फिलहाल, ये वाला, ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको एग्जांपल दिए। सो यू ओनली हैव टू लर्न दीज टू फॉर्मूलाज, और ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चैप्टर के एंड तक इन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है जी। तो दीज टू फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न। Okay, guys, now we are going to start with the pH of strong acids and strong bases. सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स दुनिया में सिर्फ 3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, there are only 3. The first one, that is nitric acid, which is HNO3. The second one, that is hydrochloric acid, HCl, and the third one, that is sulfuric acid, which is H2SO4. Okay, so these 3, my dear, they are the strong acid. इनके अलावा कोई भी एसिड आ जाए वो वीक होगा। मत ये सोचिएगा किसी चीज की पीएच 1.2 आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, पीएच से नहीं पता चलता। पीएच एक वीक एसिड की भी आप लोग कम कर सकते हैं वो ट्रिक, लेकिन these are the strong acids, they completely ionize in its aqueous solution. वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन सी होती हैं जी? स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस में जो 1 की आ जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, ये 2 होती हैं। और ग्रुप 2 के मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखा हूं, ब्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो कैल्शियम से लेकर रेडियम हाइड्रोक्साइड वाली भी जो है वो स्ट्रॉन्ग ही होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कुछ लोग वीक गिनते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग भी गिनते हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, कैल्शियम। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको, इसलिए मैंने इसको स्ट्रॉन्ग में भी लिख दिया, लेकिन ये वीक में भी आ जाता है, दोनों में आ जाता है। तो इसको आप लोग जो है ना वो एक एक्सेप्शन के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बाकी जितनी भी है वो स्ट्रॉन्ग है। Strontium hydroxide strong, barium hydroxide that is strong, and radium hydroxide this is strong. इन बेसिस के अलावा बाकी जितनी भी बेसिस हैं वो नॉर्मली वीक होती हैं। एक्वस अमोनिया को याद रखें, अमोनिया वीक बेस होती है, पार्शियली आयोनाइज होती है, ठीक है जी। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ओके गाइस, नाउ मैं आप लोगों को यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आप लोगों को मैंने 2 फॉर्मूलाज लिखवाए हैं। आप लोग रफ कॉपी के ऊपर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई वांट टू डू इट फॉर योरसेल्फ, आप लोग कीजिएगा, आप लोगों से नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। इसको मैं कल नहीं, घर से प्रैक्टिस करनी है। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन 1, यू हैव टू ट्राई एट योर होम, व्हाट इज the pH of 0.015 मोल पर dm क्यूब। मोल पर dm क्यूब किसी चीज के साथ लिखा हो तो ये कंसंट्रेशन को शो करता है। तो 0.015 मोल पर dm क्यूब sulfuric acid H2SO4। This is first question. Then question 2, what is the concentration of sulfuric acid having pH 1.3, okay, 1.12 कर देते हैं यहाँ। Okay, then question number 3,
what is the pH of 0.023 mole per dm cube calcium hydroxide? पर के barium hydroxide लिख लो यार, barium hydroxide. Okay, and then question number 4, what is the concentration of barium hydroxide having pH of 13.4. Okay, so these four are the questions. So you people have to use these two formulas. Kw, that is equal to H positive concentration into OH negative concentration is equal to 1 into 10 raised to power minus 14, and the second formula pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration. So these two are the formulas. Okay, so I suggest all of you please practice these 3 or 4 questions. Inshallah, we will do it tomorrow if you people are unable to solve it. So that's it for today, my dear.